Hello everyone. So welcome back to the channel Captain Cadet at Sea. So आज जानते हैं कि मर्चेंट नेवी क्या है और इसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है. सो आपने बहुत बार देखा होगा आजकल रील्स और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब रील्स और फेसबुक पे बहुत से लोग समुंदर में हैं और उसकी फ़ोटोएँ बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कार्गो ऑपरेशंस आपको दिखा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें क्या क्या हैं. तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रील एंड रियल लाइफ आर बोथ आर टोटली डिफरेंट. एंड अगर आप देख रहे हो कि अच्छा ये बंदा रील डाल रहा है, वहाँ पे ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, तो ये सब गलत है. हाँ, मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको दी जाती है कंपनी के थ्रू, क्योंकि एक एग्रीमेंट होता है कि हमें जब हम वहाँ काम करने जा रहे हैं तो हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए. बट इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है. यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड देर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम, like you have to do on the land 9 to 5 job or something like that. But at ship nothing is like that, right? You have to work at any time when the jobs need you. Okay, अब बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी क्या है और मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी में दोनों डिफरेंस क्या है. तो मर्चेंट नेवी तो आप क्या होता है कि हम एक जगह से लाइक से वी कैरी समथिंग फ्रॉम इंडिया लोड, एंड जो भी हम कैरी करते हैं उसको हम कार्गो बोलते हैं. एंड देन वी टेक इट टू द यूएस से अमेरिका एंड वी गिव इट टू यूएस वट एवर वी कैरी द कार्गो. सो दिस इज़ बेसिकली वट a merchant navy is. Merchant navy is a profession, sorry, in which we carry cargo from one place to another through the ships, and here the means of transport is ship, right? Indian navy, you all know Indian navy is for defense purpose, right? So these two are basically totally different things. तो कौन कौन अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है. सो अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आप अगर यू आर अ 12th पास आउट एंड यू कैन एंटर एज अ ऑफिसर, डेक कैडेट और इंजन कैडेट. वंस यू कंप्लीट योर BTech in marine engineering, then you can come as engine cadet. Deck cadet you can come after 12th class. You have to do one course, name is DNS. And if you want me to explain the throughout process, I can tell you each and everything about the DNS and how you have to apply for the courses. But this I will provide you if you give me only one comment. I will definitely make a video on this. Then you can come as a chief cook who make the food for everyone. Okay, a GS, general steward, who help to clean the ship of the officers on the ship. And after class 10th through GP rating course, this is also one course for ratings. Ratings are very important part of the ship. Okay, and they are also earning well on the ship. If you are not too much in studies, right, and if you are only have done the 10th class, then you can definitely come as the ratings. Because if you want to increase your wealth, your family life standard, so I will suggest, and if you have done 10th, you come as a GP rating. Okay, and if you are good in studies and you have just passed the 12th class, then you come as a deck cadet. That will be very good for you. And after for deck cadet we have to do two courses. One is DNS and one is BSc. One of either courses you can do and come as a deck cadet. So, and then engine cadet I already tell you. And one is also there, that is ETO, electrotechnical officers. That in that position you need not to come as a cadet, you are come as a trainee officer. And after you have done engineering in electrical. Okay, so this is all about the merchant navy. And if you want me to continue further, I just need one comment by my subscriber and I will give you the all the details you need.
Okay guys, thank you, and we will come with another video some other day, some other good day. So thank you, and please like, subscribe and share my channel, comment also, so that it give me a motivation to make the videos in my free time. मिलते हैं आपसे बाद में, and subscribe to my channel Captain Cadet at Sea. Thank you.